story is perfect and it should be heard, it should be told. Understood. That's great. I think somebody passed on behind you. So, That was mine. you can tell your daughter there is no need to scroll. She can. I'm a children's storyteller. Being a married lady, I just want to ask you कि कितना difficult होता है अपनी journey को दोबारा से शुरू करना और उसमें कितना जरूरी रहता है हमें अपने surrounding का support करना. And as a volunteer, I was going to government schools. Okay. And I am associated with some NGOs also where I do some pro bono work for them. Amazing. तो ये तो कहानी हुई 2017 से. तो हम अगर शुरुआत से शुरू करें, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई और फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया? Hi, how are you? I'm good. Thank you so much. I'm glad to see you. Same here. तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आज पहली बार ही हमारी बात हुई है और पहली बार ही we are doing this session, so I'm really glad. तो लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, जैसे शो को हम शुरू करते हैं वैसे शुरू करेंगे. सारी ऑडियंस के लिए I just want to welcome once again for this Become a Confident Speaker series. My name is Saquib. I'm a motivational speaker and communication trainer. I help students and professionals to become a confident speaker. यही मेरा काम है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा प्रोफेशन है. So this is about me in brief. और हम ये बहुत casual conversation है और this is not something very professional. I'm not a professional interviewer, not a professional host either. तो हम इसको casual रखेंगे और whatever, if you want to ask any question in between, you have all the right to ask that. और इस सीरीज से मैं बस अपनी ऑडियंस को just want to inspire them, just want to educate them, and with my efforts. So that is the whole agenda why we are doing this conversation. And I just want to know your story, your expertise, that everybody should listen that. That is the reason or the agenda of this conversation. तो मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप कहाँ से हैं और आप करंटली क्या कर रही हैं? So first of all, thank you so much for inviting me on this platform. I'm really delighted and looking forward to interact with everybody. जैसे आपने बताया, my name is Swati. I'm Swati Goyal and I am based in Delhi NCR, Ghaziabad to be precise. And I'm a storyteller by profession. I've done a certified course in storytelling. Wow. Yes. And I am also a practicing theater artist as well. Oh wow, that's amazing. So how to start? So right now, because of the this pandemic situation, I'm not taking any offline classes. So we are online. I take my sessions online. And before that, like 2017, I started this journey. Okay. And I was going to schools. I'm a freelancer storyteller. As a freelancing, I was taking sessions in school. Basically, I take sessions for the primary section. Okay. Yeah, I'm a children's storyteller. Children's storyteller, understood. Yeah. And I was taking sessions in various schools across Delhi, NCR, Gurgaon, Noida. And as a volunteer, I was going to government schools. Okay. And I am associated with some NGOs also where I do some pro bono work for them. Amazing. तो ये तो कहानी हुई 2017 से. तो हम अगर शुरुआत से शुरू करें, आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई और फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया, तो वो अगर आप थोड़ा जर्नी अपने हमारे साथ शेयर करें. Yeah, sure. So I have been born and brought up in Dehradun,
in the foothills of Dehradun. Yeah, I love that place. जैसे ही देहरादून नाम आता है मेरे मन में कुछ होने लगता है. I can see that that emotion. You blushing, started blushing as well. Yes, some rush of emotion is there when I hear that my hometown. कोई दूसरा भी बोलता है मुझे कि I'm from Dehradun, तो मुझे कुछ एक connection feel होने लगता है. बिल्कुल. So I've done my schooling and my college from Dehradun. Okay. So yeah, then I moved to Bhopal after marriage. I was in 2 years. I was in Bhopal. Okay. So where I started with my I was already into education. I was teaching back in Dehradun. Okay. Then I went to Bhopal. There also I did some teaching. Okay. About 1 year I was into teaching. Okay. Then I had my kids, and then I took a long sabbatical, a long one. So then cut to 2017. Achha. Then I thought the need of then I felt something is lacking. So like kids were growing, they were grown up already. My son is in college, my daughter is in grade 10, and they had their own lives, right? Okay. Kids, then they said, Mama, we want our own freedom, we want everything, but we need space. So I was free by that time. And my husband is a doctor, he's a surgeon. Okay. So he was also like busy. So that time I needed something to engage myself. I wanted to go back to school. I wanted to go back to teaching. Mm-hmm. But जिससे भी बात करो, everybody used to say, मत जाना वापस, मत जाना, it will be really, no offense, but for private schools ऐसे बोलते हैं कि भाई they'll really आपका खून चूस लेंगे. Don't go back to school. So then one day, this storytelling course just popped up on my FB screen. Okay. They were having this workshop. It was a 15 days workshop, and something clicked. So just I thought कि ये तो मेरी this is my calling. I should go for it. Okay. तो यहाँ से फिर आपने दोबारा स्टार्ट किया. Yes, and that was the yes. Being a married lady, I just want to ask you कि कितना difficult होता है अपनी जर्नी को दोबारा से शुरू करना, और उसमें कितना जरूरी रहता है हमें अपने सराउंडिंग का सपोर्ट होना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी शादी हो गई, you started, you thought it's already done, you're busy with your family, with your kids, and suddenly, as you said, कि बच्चों को फ्रीडम चाहिए, everybody is busy in their own life, and then you said यार 5 साल पहले भी जरा मजा आ रहा था जिंदगी में, तो आप दोबारा स्टार्ट करें, तो कितने हद तक हमें अपनी सराउंडिंग का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और आपको कितना मिला? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, because and I was very lucky कि I got 100% support from my family. When I looked into that course, it was costing a little high. Like I was thinking कि जाऊं, should I do it or not? Because will it be worth? Will I be able to do anything? Will I be able to achieve after doing this course? Or will I just waste my money? So I just asked my son, not even my husband. I asked my son, he was in grade 12 that time. I said, should I go for it? And his words were, Mama, if you think, अगर आपको लग रहा है ना दिल से कि you want to do it, just go for it. Do not think anything else. Just go for the course. Just go for it. And those words just hit me so hard that I went for the course. I told my husband, just pay me this, give me this money. I have to pay the fees, and I'm going for it. तो आपको full support मिला, and Swati, with this episode, I'm sure everybody who will listen us or watch this video will 100% inspired. That's what I said when I was talking to you, that I'm very excited for this conversation. वैसे तो मैं जितने भी इंटरव्यूज करता हूँ मैं बहुत excited ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है लोगों की जर्नी के बारे में जानना कि वो कैसा था, और इस कंटेंट से मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो पाए. तो आपका एक एक वर्ड लोग सुनेंगे. वैसे कोई इतना बड़ा फैन बेस नहीं है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर आज नहीं तो कल हम बूंद बूंद से ही घड़ा भरते हैं. तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ जरूर आपकी कहानी से इंस्पायर हो. तो आपने जैसे बताया कि 17 में आपने स्टार्ट किया, दोबारा से रिवाइव किया, आपको सबका सपोर्ट मिला. तो स्टोरी टेलिंग, पहले आप एक आसान शब्दों में, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं,
आप बताइए स्टोरी टेलिंग क्या होता है, बिकॉज आई नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल which is required for this generation, but बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको अभी क्लैरिटी नहीं होगी. तो आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप इससे काफी जुड़ी हुई है, तो आप बताएं आसान शब्दों में व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, है क्या स्टोरी टेलिंग? आसान शब्दों में बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि जो ये यूनिवर्स है ये एटम से नहीं बना है, स्टोरीज से बना है. एंड इन ईच ऑफ अस इज अ स्टोरी टेलर. अगर एक बच्चा घर में आके अपनी मॉम को बोलता है मम्मा आज बताऊं क्या हुआ स्कूल में, ही इज टेलिंग अ स्टोरी. So everybody is, lots of people ask me कि ये कोर्स करने के बाद तुम स्टोरी टेलर बनी, how should we go about it? Should we, मतलब everybody should do this course or what? So I tell them कि no, story teller ऐसा कोई, we are all born storytellers. Right. So just एक हमें shape मिल जाती है, we get a platform after doing this course. We can say that if we go to a school or some other place or in some corporate world, we can just show the certificate that yes, we are a storyteller. So this gives us a little, what can we say, a little authentication. Right. Maybe it means you are qualified for that. Yes. So इसका काम क्या रहता है, मतलब what how I can call somebody a storyteller? अगर मैं storyteller बनता हूँ तो मेरा काम क्या है, मैं क्या काम करूंगा, मतलब how? As a children's storyteller, मेरा काम ये है कि when I go to the school, I choose a story which will impact the child in their imagination, in their learning, building their vocabulary, their communication skills. So there should be some take away message from my story. So as a storyteller, हमारा ये काम है जब हम कहीं भी story सुनाएं, so it should not be just a story सुना दी. That can be, आजकल इतने सारे social media पे platforms है, maybe YouTube है, then there's so many things, there's so many apps. Why a storyteller is needed there? Right. Because the storyteller invokes the imagination, invokes the communication skill, evokes the confidence in the child. Right. So do you write those stories, or you got those stories from wherever you were working with? Yes. So no, I don't write these stories. We have sources. Like there are lots of, before that I did not know there was such a, when I entered this world of storytelling, it opened a box of Pandora's box for me. There are so many, there's beautiful work is being done by lovely children's story writers. They're writing beautiful children's story books. So we pick up from those books and we give credits to the writer. We cannot just go and tell the stories like that because that will be plagiarism. Okay, understood. And what is the difference between somebody who is not professional versus professional? For example, if I'm writing, I'm not a professional writer, right? So if I'm writing a story, and if you being a professional writing a story, so what is the difference is there according to you? If one single difference you can identify, कि भाई साहब ये इंसान अभी इसको थोड़ा मतलब he is not that professional और ये professional की story writing है, क्या एक चीज ऐसी होती है जिससे आप identify कर सकते हैं? Yes, of course there are lots of in any profession, if you see a polished writer or anything, 100%. Any person तो who कुछ order में होता है वो या क्या होता है? No, like I am into storytelling, so story writers maybe they have their tools for story writing. So that they will be able to tell. आप पढ़ते हो तो आप समझ आपको भी तो लगता होगा ना कि हाँ ये स्टोरी में बहुत जान है यार, ये बहुत अच्छी लिखी है. जी बिल्कुल. तो आप किस चीज से आइडेंटिफाई करते हो आप? जी, तो ये एक सेइंग है या ये कह लीजिए इन स्टोरी सर्कल भी से कि कहानीकार कहानी नहीं चुनता है, कहानी कहानीकार को चुनती है. सो हम लोग बहुत सारी कहानियां, आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टोरीज बिफोर अ सेशन, आई रीड अ लॉट, आई स्टडी अ लॉट, एंड देन मतलब मे बी आउट ऑफ 50 स्टोरीज एक मे बी लाइक अ सीव, एक छलनी की तरह आई पुट ऑल द स्टोरीज इन दैट सीव, and whatever story comes out from that, it just touches me that this story I have to tell.
Maybe I'm not saying if it's written by a professional storyteller, maybe it's written by an amateur. Doesn't matter. I got it. But it just hits you that this story is perfect and it should be heard, it should be told. Understood. That's great. I think somebody passed on behind you. So that was mine. You can tell your daughter there is no need to scroll. She can pass by normally. That's not a problem. Okay. Just kidding. So right. अगर हम इसका बात करें professional aspect, Swati, as a storyteller, if somebody want to build their profession as a storyteller, तो इसका क्या scope है in India? If I ask you, because you've been doing this since long. So according to you, what is the professional scope we have as a storyteller? Saquib, earlier people, when they didn't know about storytelling, right? So the scope was very less, frankly speaking. Okay. Because it was a very new field, and people were like, "What is this? What storyteller? Is it a profession?" I used to, and I'm talking about the recent times. In 2017, also, when I used to say I'm a professional storyteller, so they used to say, "Acha, theek hai, कहानी सुनाती होंगी ना जाके." I've done a certified course. Is there a certified course for storytelling? They were like shocked. Right. Even in schools. Right. When I used to go to schools to pitch myself. Right. So they used to say, "Ma'am, story to hamari teachers bhi suna leti hain. Why should we pay the storyteller? Right. Ek storyteller ko kyun payment karna chahiye?" So like I was dejected. I was rejected, and slowly some changes came. And small school, little like primary schools, they were inviting me as a storyteller. "Ma'am, no, you have to come and take sessions in our school." Okay. And then they used to feel yes, there is a difference between a professional storyteller. Right. Of course. Right. There will be, of course, if somebody learned a skill. We know the art and craft. Yes. Right. So we have learned this art and craft of storytelling, how to choose a story, how to modulate your voice, how to use different kinds of things to make the story interesting. Right. So now there's a vast scope for storytellers in India. We are having storyteller tribes. We are having festivals pan India. We have big festivals throughout India, storytelling festivals. Great. That's amazing, because most of the people, most of the kids, I think they're coming out from the school, college, and they want to pursue their career as a storytelling, because पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि storyteller क्या होता है. दादी नानी used to be our storytellers. Storytellers, exactly. अब it became a profession. So I think इस आपकी इस conversation से, इस वीडियो से शायद लोग समझ पाएंगे अब कि क्या होता है storytelling, कैसे वो अपना profession बना सकते हैं, और अगर किसी को अप्लाई करना है फॉर स्टोरी टेलर तो कैसे करेगा वो, मतलब कैसे वो काम कैसे ढूंढ सकता है? इन सिंपल वर्ड, काम कैसे ढूंढना है? पहले तो वही है कि उनको अपना दे हैव टू गो फॉर अ कोर्स. नाउ लॉट्स ऑफ स्टोरी टेलर्स, सीनियर स्टोरी टेलर्स, दोस हैव बीन इनटू द बिजनेस फॉर लाइक पास्ट 20 years, 25 years, like in Europe, America, there are lots of, and some South India was the first place in India where storytelling, it sprung up there. We have very senior storytellers from there. They run their workshops, so one can join their workshop, and then maybe and in these times, thanks to COVID, they can even take online sessions with some international storytellers. They run their programs. Amazing. So and keep on building their skills. After doing this course, maybe they can get associated with the school. The storytelling school helps them with work. Or they can do some freelancing work. They can go to schools and then ask for work, and slowly they can create online content. Understood. That's great. Lots of other things. And you are the first person on planet who told me that thanks to COVID. मतलब मैंने गूगल पे भी अभी ये मतलब अगर सेंटेंस डालूंगा तो took it very like positively. I have been like struck by COVID twice, but still it's fine.
COVID hits us, in a bad way. We know that, Yes. उसने बहुत कुछ खराब किया है. Artists were very badly hit, but like we sprung up, and like Exactly. goes on. Life goes on, and I think this is how life should go on. और Right. पॉजिटिविटी का यही काम है कि रोशनी ही अंधेरे कमरे में उजाला कर सकती है और कुछ नहीं. तो that is the positivity. That's why positivity is required. So अच्छा, उसी पे मुझे एक वो छोटी सी लाइंस याद है. if you allow, I can say these lines. इरशाद. So दह धरे के रोग है हर काहू को होए, ज्ञानी काटत ज्ञान से मूर्ख काटत रोए. बहुत बढ़िया. आप इसको अगर वो भी कर दें एक्सप्लेनेशन तो मजा आ जाएगा ऑडियंस को. एक्सप्लेन ये है कि मतलब ये जो रोग है, मतलब नॉट योर फिजिकल रोग, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक ये सबके रोग हैं. दह धरे के मीन्स अपनी बॉडी में जो रोग हैं वो हर काहू को होए. मतलब आई एम रिलेटिंग दिस टू कोविड. हर काहू को होए मतलब एवरीबडी वाज अफेक्टेड. ज्ञानी मीन्स लर्नेड पर्सन. ज्ञानी काटत ज्ञान से, मतलब ही विल बी लाइक इंटेलिजेंटली हैंडलिंग द सिचुएशन. And मूर्ख काटत रोए means a stupid person will cry over it. Exactly, very well said, very well said. And रोने के बहुत सारे reasons होते हैं, और I think we all are sad, or I think not sad is not the right word. हम सब अपनी जिंदगी में अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं. सबको अपनी परेशानी ही बड़ी लगती है, ये फैक्ट है. But I think it's very important to be positive. और लोग हमेशा मुझसे कहते हैं जब भी मेरे मोटिवेशनल सेशंस रहते हैं कॉलेज में कि बड़ा आसान है ये कहना कि पॉजिटिव रहिए. तो मैं उनसे बोलता हूँ आसान नहीं है. मेरी जिंदगी में भी कुछ आसान नहीं है, आपकी जिंदगी में भी आसान नहीं है, और हमें पॉजिटिविटी खोजनी पड़ेगी. हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड यू कैन परफॉर्म बेटर. एंड वी ऑल आर हियर टू परफॉर्म. As an artist, you want to perform better when you have your script, you are on the podium. As a speaker, as a trainer, I want to perform better. But अगर मेरे ही दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, मैं ही लो फील कर रहा हूं, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो पाएगा? So it's very important. So बिल्कुल सही बोला आपने. being a communication trainer, as I said, कि मैं मोटिवेशनल सेशंस करता हूं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में. अभी करंटली मैं हिमाचल में हूं, तो उसके साथ साथ I train students and professionals to become a confident speaker. So, yes, being a professionalist as you are in your own field, how much communication is important for today's time, and how much communication is required for this generation to learn? आपका इस पे क्या take on है? My take would be that communication is the key. Okay. बहुत important है. We can start it from home, be it with your family members. Without communication, the gap is always increasing. And then you could take it to the society. Communication is the key. हर जगह, हर relationship में, हर आप maybe in your office, with your boss, with your, even I can say even with my maid. If you're not communicating. The same thing I was about to say. Communication to your maid. और आपने बिल्कुल वही स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकाला. बिल्कुल आपने सही कहा. मैं यही आपसे पूछने वाला था. According to you, communication is very important in a personal relations as well as professional relations as well, right? Exactly. Right. Exactly. Okay. Without communication, the gap increases. There are lots of misunderstanding. Why not communicate and tell the other person what you are feeling, what you want to convey to him? Right. आजकल बहुत साधन है कम्युनिकेशन के. बहुत ज्यादा साधन है. और बहुत सारे साधन है. मैं अपनी ट्रेनिंग्स में, अपने सेशन में ये बताता हूँ कि communication is the number one skill of this century. Right. No matter in which profession you are in, it doesn't matter what you are doing or what you are not doing. If you cannot communicate properly, if you are not able to express yourself properly, the chances of your growth will be very less. मतलब आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी. आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, आप रैपर हैं. It doesn't matter कि आप किस इंडस्ट्री से आते हैं, पर अगर if you cannot put your thoughts across the table confidently, game is over.
गेम इज ओवर। Exactly. और स्वाति पता है, मैं आप भी एजुकेशन इंडस्ट्री से हैं, मैं भी इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देख रहा हूँ। बच्चे स्कूल कॉलेज से बाहर आ पा रहे हैं, बट उसके बाद भी जब उनको 4 लोगों पे बात करने का मौका, अपने दोस्तों के साथ तो सब कंफर्टेबल है, सब ठीक है, मतलब अभी बैठे हैं सब, तो भाई मेरा अपने चिल है, सब 5 लोग बैठे हैं। लेकिन अगर अभी मैं सेटअप चेंज कर दूं, मैं हाथ में माइक दे दूं और मैं 5 नए लोगों को खड़ा कर दूं एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नहीं हो पा रहा, लोगों से नहीं हो पा रहा। If you put them into the spot, they are blank. And that is the reason इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द रीजन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, दैट इज द रीजन जॉब लोग स्विच करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है यार इंटरव्यू कैसे क्रैक करूंगा मैं, राइट? सो कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो मैं भी इस वीडियो, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, और आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ लर्नेबल स्किल। ऐसा नहीं है कि ये, जब मैं अपने स्कूल में था, आई एम नॉट समबडी कि मैं बताऊं कि मैं बहुत अच्छा था, नहीं, मैं बड़ा बेकार स्टूडेंट था। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं ये बात, मैं सबसे ये सेम, राइट? तो यस, बट विथ टाइम वी लर्न कि यार हाँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाति सीख सकती है, साकिब सीख सकते हैं, आप क्यों नहीं सीख सकते? जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड इफ यू विल नॉट लर्न दैट, आई थिंक आप स्वाति बताइए अपना कोई भी इंसिडेंट कम्युनिकेशन की वजह से, जब आपको बहुत चीजें, या तो आपने कुछ चीज खराब हो गई हो या फिर कुछ रिजॉल्व हो गया हो, कोई भी एक इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू यू आपकी कम्युनिकेशन की वजह से या तो कुछ संभल गया हो या फिर कुछ खराब हो गया। यस, तो मुझे जो एक इंसिडेंट याद आता है वो है स्कूल टाइम का। आई वाज इन ग्रेड 8 एंड आई वाज द मोस्ट क्वाइट, मोस्ट बैक बेंचर जो कहते हैं वो। आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो टीचर के सामने जो बड़े जो आगे बड़े बच्चे बैठे रहते तो उनके पीछे छुपता था कि कोई मुझसे कुछ सवाल ना पूछ ले, कुछ मेरे से कुछ ना, मतलब आई डिडंट वांट मी टू बी पुट इनटू द स्पॉट। तो summer holidays were over and we had been given some holidays homework, और उस दिन सबमिशन टाइम था एंड द टीचर वाज आस्किंग किस किसने होमवर्क कर लिया है, किस किसने कर लिया है। एंड दो आई हैड फिनिश्ड ऑल माय हॉलीडेज होमवर्क and I was so scared to communicate because the teacher was asking directly किस किसने कर लिया है। I was frozen, मतलब जैसे होता है ना कि my tongue stuck to my palate, मैं बोल ही नहीं पाई। Yes ma'am, I completed my homework. Right. I had my notebooks in my bag. इतना बोलने में मुझे इतनी डर लग रहा था and I did not submit my homework that day and I got a 0 on my homework. And though the notebooks were in my bag, सिर्फ बोलने की वजह से कि मैंने नहीं किया, मतलब मैंने कर लिया मैम। एंड दैट वाज अ बिग थिंग कि जो मुझे अभी भी वो मुझे याद है कि आई वाज क्राइंग कि मैंने बोला नहीं एंड आई गॉट अ 0 ऑन माय असाइनमेंट। सच में मतलब दिस इज रियली हार्ट टचिंग, मतलब मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभी मतलब हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये हैं ही, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग। आप आप स्टोरी को बताते हुए फील कर पा रहे होंगे कि ऐसा है। आई कैन सी, मतलब मेरे को उन टीचर के चेहरा दिख रहा है। आई कैन सी माई सेल्फ सिटिंग एट द बैक बेंच, और मैं मतलब जैसे होता है ना कि टंग टाइड टाइप का बच्चा, बिल्कुल बोल ही नहीं पा रही हूँ कि क्या करना है। नहीं, मैंने कर लिया, जस्ट वन वर्ड आई हैड टू से, मैम यस आई डिड माय होमवर्क एंड आई डिडंट से इट। इतनी सच्चाई है आपकी स्टोरी, मतलब मैं, इट्स नॉट माय स्टोरी बट स्टिल आई एम हैविंग अ गूज़बम्प, यू कैन सी दैट। मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे रिलेट करता हूँ अपनी स्टोरी के साथ। मुझे आज भी याद है, मैं अपने स्कूल टाइम पे अपने स्कूल टाइम पे जब मैं क्लास में गया और मेरी तबीयत खराब थी, 1-2 दिन मैं घर पर ही था। उसके बाद जब 2 दिन के बाद मैं गया तो माय टीचर टोल्ड मी के 2 दिन से कहाँ थे, मैं आंसर नहीं कर पाया। मैं 2 दिन फीवर में था, मेरी तबीयत खराब थी, मैं आया, टीचर ने मुझे पूरा पीरियड बाहर खड़ा किया और फिर मैं क्लास में आया और मेरा दिन गुजर गया। ऐसे ही सेकंड डे हुआ और एक बच्चा
दूसरा बच्चा आया, वो भी 3-4 दिन से नहीं आया था, मैं सिर्फ 2 दिन से नहीं आया था, वो पूरे हफ्ते से नहीं आया था। वो आया, आकर उससे टीचर ने बोला कि आप क्यों नहीं आए 6 दिन से। उसके पास एक एप्लीकेशन थी, उसने वो एप्लीकेशन दी एंड ही सेड कि ये मेरी मम्मी ने एप्लीकेशन ली है, अब आप इसको पढ़ लीजिए सर, मेरी तबीयत बहुत खराब थी 6 दिन से। तो टीचर ने उससे कहा तो बेटा क्यों आ गया, आज 2-4 दिन और रेस्ट कर लेते। तो यू वोंट बिलीव, मैं अपने आप से सोच रहा हूं कि यार साकिब, तू 2 दिन से नहीं आया भाई, तेरी तबीयत भी खराब थी और टीचर ने तुझे पूरे पीरियड बाहर खड़ा किया, ये 1 हफ्ते से नहीं आया और सेम प्रॉब्लम पे इससे बोला जा रहा है कि बेटा 2 दिन और आ जाना, और क्लास में उससे कुछ पूछा भी नहीं गया, कुछ किया। तो मैं 2-4 दिन तक ये सोचता रहा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। देन टाइम के साथ हम रियलाइज करते हैं, तो मैं समझ पाया वक्त के साथ कि कितना जरूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करना। कभी कभी आप अपने आप को एक्सप्रेस ना करके बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ये तो एक पर्सनल एस्पेक्ट है इसका। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट ये भी है कि आप जॉब में, कंपनी में अपने कलीग्स के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, आप उनके साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। स्वाति, यू वोंट बिलीव, जब मैं मुझे पैसे कमाना थे एक बड़े पहले से ही, मुझे लगता था कि मैं यार आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मैं पैसे कमा लूं और मैं अपने परिवार को, एक था अपना स्टोरी। मैं 12th के बाद जब मैंने नौकरी करने गया ना, मैं ज्वेलअप ही नहीं हो पा रहा किसी के साथ। मुझे लग रहा है कि मैं कहां से आया हूं यार, मैं क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं 12th के बाद वापस आया, मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद दोबारा गया, मैं वही साकिब हूं जो 12th करके गया था, अभी भी वही फील कर रहा हूं। मुझे लगा कि यार पहले शायद क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर लगा कि क्वालिफिकेशन नहीं, ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। और देन आई थॉट कि नहीं, ये अब बॉस ऐसे नहीं चल पाएगा। देन आई लर्न थिंग्स, आई ट्राई टू टेक फ्रॉम माय मेंटर्स, आई लर्नड, आई हर्ड अ लॉट, आई रीड अ लॉट, आई लिसनड अ लॉट, और बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स लगाई, सीखा। उसके बाद आज इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट से अपने बोलता हूं, और जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं या मिलते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि दुनिया में अगर कोई एक स्किल आपको सीखनी चाहिए सबसे पहले, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। That is communication. And it is very, very, very important. Very important. एंड मैं तो ये कहूंगी कि आप प्रोफेशनली नहीं, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ पे इफेक्ट पड़ता है इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग। 100%. It's affecting your mind, if it's affecting your even your body language, सब आपका everything gets like shattered. Yeah, shattered, right? सब कुछ। और हम स्कूल कॉलेज में शायद नहीं सीख पा रहे हैं अभी इस टाइम में, क्योंकि अभी तो हम कोविड का बहाना है हमारे पास कि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, बच्चों की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, उसके पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ मैंने सेशंस किया, और साथ ही अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं लोग, PhD students, and it's heartbreaking to see that. Heartbreaking. मतलब if a person like me, जिसके अच्छे नंबर नहीं आए, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो ना कर पाए ना, तो एक्सेप्टेबल हो जाता है, right? लेकिन आपके नाम के आगे पीछे डॉक्टर लग रहा है स्टिल, और अगर यही बात आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल दें तो इट साउंड्स रूड। मैं ट्रेनिंग में गया और मैंने बच्चों से बोला, दिल्ली का एक कॉलेज था, और वहां जाके मैंने बच्चों से बोला कि हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर तुम आज अपने आप को डेवलप नहीं पा रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम्हारे टीचर्स हैं। तो बड़ा बुरा लग गया टीचर्स को, और उस स्कूल में मुझे कभी दोबारा इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंट, एक्चुअली सच्चाई, सच कड़वा होता है, राइट? कड़वा होता है, बिल्कुल। मुझे अभी भी मेरे एक्सपीरियंसेस याद हैं, तो टीचर्स के कॉन्वर्सेशन में नहीं घुसेंगे, मुझे लगता है वो बहुत डीप चला जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या सीखना है, कब सीखना है, और ये हमें अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और पीपल लाइक अस हु इज वर्किंग एज अ फ्रीलांस, हम लोग को अपना पैशन, बाय द वे मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा पैशन है, आप जो कर रही हैं आपका पैशन है, या ये फेसबुक पे पॉपअप हो गया था इसलिए आप कर रहे हैं? अगर स्टोरी टेलर की जगह no, that was my passion. ओके, yes. मुझे लगा कि अगर रैपर आ जाता, रैपर का था, आप अभी भी रैप कर रहे हो। तो आपका ये पैशन है?
And that is my passion. Yes. Great. I don't know वो मेरे को एक I found this was my calling and then I went into it and this was the best thing that could happen to me. इसके पीछे भी एक story behind a story भी है. Maybe that's for another day, another time. 100%. हम जरूर एक सेशन जरूर रखेंगे जब आपका स्टोरी टेलिंग ही रखेंगे और आपका मैं चाहूंगा जरूर कि आप कोई स्टोरी सुनाएं और जितने भी लोग हैं I just zip up myself and you just आप स्टोरी सुनाएं और सब सुने. That will be my pleasure any day, any time. That will be great. तो and one question for you, do you use stories in your sessions? 100%. Oh. मतलब अब I have मतलब ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि ये मुझे गॉड गिफ्टेड है, बट मैं कहीं भी बैठ के कोई भी कहानी बना सकता हूँ. मतलब और वो सच्ची भी लगेगी, by the way. If I'm standing on the stage and if I'm talking something, so on the stage, on the impromptu, I can create stories and which is real. उसमें मैं होऊंगा, उसमें मेरी कहानी होगी, आपके इमोशन कनेक्टेड होंगे और मैं सुना सकता हूँ आपको. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं. तो इसका सेशन हम जरूर करेंगे. तो इसको हम कंक्लूड करते हैं और आपसे लास्ट एक जरूर मैं ये सवाल लेना चाहूंगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा और मैं चाहता हूं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो आपकी ये बात सुने. योर डॉटर इज देयर, आप उससे बोलो कि वो आज You want to come, Swani? No, she wants to stay inside. Mom, मेरा नाम नहीं लेना था. तो अभी जितनी भी आपको लड़कियां देख रही हैं, सुन रही हैं, जिनके पैशन है, जिनका ड्रीम है, दे वांट टू डू समथिंग, या तो वो शादी में अटक गई हैं और उनको लग रहा है कि कहां से मैं स्टार्ट करूं, या फिर फॉर एग्जांपल शादी भी नहीं हुई है और उनके सपने हैं और पीपल आर नॉट सपोर्टिंग देम, द फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग देम. तो आपका उनके लिए क्या एक शॉर्ट मैसेज है जिससे वो इंस्पायर हो? तो मैं सबको गर्ल्स, बॉयज, एनीबडी हु स्टक, उनको मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि एम फॉर द मून, you'll definitely fall into the stars. Great, short and crisp, right? Yes. So do not hold yourself back. Go for it. Great. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? What will happen? हार जाएंगे. What will happen? हार जाएंगे. So what? तो क्या होगा? At least try तो किया. 100%. You will not regret it later that try नहीं किया, काश try कर लेते. 100%. So everybody who is listening us right now, मत सोचो कि कौन साथ है कौन नहीं. Just try to give your best shot. Yes. Execute your plan. Don't waste your time in planning only, because people who execute well have a chance to win in life. So इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को एंड करेंगे और मैं अपने पूरी ऑडियंस, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सब के भी आपसे कहना चाहूंगा, साथी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. I don't know about you, but I really enjoyed this conversation, and thank you once again for joining us. और at last आप क्या कहना चाहेंगे, if you want to say something? Thank you so much, and you can see my face is beaming. I also loved the session, and last में बस मैं 2 लाइनों से खत्म करना चाहूंगी इस conversation को. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे. So as a storyteller, my voice is my tool. So that was really amazing. इससे अच्छा ये एंड नहीं हो सकता था. Thank you so very much for हमें सुनाने के लिए. और guys, everybody is watching us, thank you so very much. I hope I was not that bad. You were not bad at all. It was amazing. It was really amazing. इसीलिए हम एक जरूर सेशन करेंगे जिसमें आपका स्टोरी टेलिंग ही चलने वाला है. So thank you. Anyway, thanks for calling me. Thank you for having me over, and I loved it. Pleasure is all mine. Thank you guys. Thank you for watching us. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में Become a Confident Speaker, एक नए गेस्ट के साथ, नई स्टोरीज के साथ और नए मोटिवेशन के साथ. तब तक आप देखते रहिए साकिब खान का ये वीडियो Become a Confident Speaker. Thank you so very much, everyone.